After building a deck, players compete until they lose 3 matches or win 7. Players with better records receive more rewards. Of course, while some cosmetic rewards are only available in sealed mode and can only be obtained by players who win 4 matches or more. Guys, you should definitely download this game in your mobile phones and see it for yourself if you like it or not. But the global mobile gaming market in general is expected to exceed 2.32 billion users by 2027, according to a data reported by Statista. Be it any Web3 game, we will definitely cover it in our gaming segment. Stay tuned for more interesting updates and we will meet again next Thursday. Until then, keep watching 3.0 TV and do not forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Do log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code to know more. Get ready for a cricket adventure like no other. The cricketing world is abuzz with excitement as the ICC Men's ODI World Cup 2023 is just around the corner. All it takes is one day, क्योंकि ये ICC Men's Cricket World Cup है. And a very warm welcome to all of you. I'm your host Ruchi Sharma, and in today's special segment we will explore the Web3 connection of upcoming Cricket World Cup. But before we get on to it, here's a brief detail about the upcoming World Cup. The ICC World Cup 2023 will begin in India from October 5th onwards. There are 10 teams participating in the tournament. Host country India, England, Australia, Pakistan, Sri Lanka, Netherlands, Afghanistan, South Africa, New Zealand and Bangladesh. The tournament will see 48 games played across 10 venues in India, with the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad hosting the opening match on October 5th between New Zealand and England, and also the final on November 19th, 2023. Whereas India's campaign to win the third World Cup would begin with clash with mighty Australia on October 8th, 2023. In a grand gesture of celebration for the World Cup being hosted on home soil, Adidas has revamped the ODI jersey, replacing the 3 white stripes on the shoulders with the vibrant tricolour. The BCCI logo now proudly bears 2 stars, symbolising India's historic ODI victories in 1983 and 2011. Adidas, the official kit sponsor of Indian cricket team, has unveiled its "Teen Ka Dream Hai Apna" World Cup campaign. A testament to over 1 billion Indian fans' dream to see their team win a third ODI World Cup. Let's have a look at the "Teen Ka Dream Hai Apna" campaign. चलती दौड़ती फूलती सांसों में, चीख बनती उन आवाजों में, आंखों में तेरे ये फायर है, चिंगारी सी उठी डिजायर है, सीने पे फीलिंग जो रखी है, हर एक के चेहरे पे झलकी है, ख्वाब एक चीते सा भागा है, 2011 से जागा है, जो सोने ना दे वो सपना, टीम का ड्रीम है अपना. Excitement and expectation are in the air as cricket fans across the globe prepare for the ODI World Cup 2023 in India. Cricket fans all across the globe are discussing which teams they think will do best in the next World Cup. Now the world of Web3 is joining forces with International Cricket Council. Yes, you heard it right. In a first-of-its-kind technology collaboration, the International Cricket Council has partnered with Swiss non-profit organization the Neo Foundation to build a blockchain-powered Web3 fan engagement app for the 2023 Cricket World Cup in India, which promises to reach hundreds of millions of fans over the next 6 weeks.
The app will allow fans to play prediction games requiring strategy selections for games during the competition. Fans will earn points reflecting their selection and the actual outcome of matches, counting towards leadership and rewards during the competition. The first project is a strategy game for the ICC Men's Cricket World Cup, where fans create a dream team, collect points and redeem prizes based on the real game performance of their pick players. Every player will have the opportunity to make decisions in 3 crucial areas: batting, bowling and fielding. As the ICC Men's Cricket World Cup progresses, each player's team will earn points based on the actual on-field performance of the players they have selected. A leaderboard will keep tabs on the performance of each fan, and those who excel each week will receive rewards such as match tickets, exclusive events, Men's Cricket World Cup merchandise and various other prizes. The overarching goal is to introduce a fan passport, a digital ledger of fan interactions that is impervious to tampering. Under this partnership, the NEAR Foundation will serve as the ICC's official blockchain partner until the end of 2025. The ICC's first foray into the world of Web3 was the creation of a non-fungible token platform called FanCraze in 2022 that gave fans the ability to own highlights of historic moments from various ICC tournaments. Let's hope this collaboration with ICC and NEAR has the potential to increase fan engagement and utilize blockchain technology to make cricket an interactive and exciting game. In conclusion, being a fan of Indian cricket team, I want to give shout out to Indian cricket team from the team of 3.0 TV and say, "Teen ka dream hai apna." That's all in today's special segment. We will meet again with more exciting stories. Till then, keep watching 3.0 TV. Please like, share and subscribe to our channel. And for more such updates, please log on to our website www.3worldstv.io or scan the QR code. Hello and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma. In a recent remark, Franklin Templeton CEO said tokenization is securitization done on steroids. Such remarks are definitely driving anxiety among investors. Let us try to understand whether the tokenization is a mere hogwash or holds promise to turn future into a reality. It must be recalled that consulting group BCG had forecast the asset tokenization to reach $16.1 trillion by 2030. That's huge. At that level, the tokenization market will be more than 5x the market for gold. No wonder everyone from institutions to music artists are already jumping the bandwagon. To better understand the prospect, listing here with 3 prime examples. The first being of KKR. The second largest PE firm is tokenizing a part of its healthcare growth funds. They will use tokenization to lower the minimums for access to their funds. The second example is that of investment company Franklin Templeton. It has tokenized its money market fund, the Franklin On-Chain US Government Money Fund. Some people believe that Franklin Templeton is worried about startup competitors that offer similar tokenized funds. As per the market grapevine, one tokenized fund competitor has attracted nearly $200 million in investor money. The third example is that of Rihanna, the Barbadian singer, songwriter, businesswoman and actress. She is a prominent singer of the 21st century with a huge fan following. Last year, Rihanna offered an NFT that gave people a piece of streaming revenues on one of her hit songs. Owning a piece of fan art is one thing, but owning a piece of your favorite artist's song is another. These are fantastic examples of tokenization, taking an illiquid good and making it liquid through tokenization. German pharma company Boehringer Ingelheim has tied up medtech firm Zeiss Medical Technology to use artificial intelligence to help spot and treat eye diseases before permanent damage. Zeiss is expected to use AI algorithms to sift through the sets of imaging data on its cloud platform.
The AI is expected to analyze those scans to look for early markers of retinal diseases. Currently, there are more than 300 million people globally who are at a risk of retinal diseases, but the number of only expected to grow due to factors such as an aging population. Findings, according to the two companies, can be used for diagnostic and predictive tools and to discover new therapies. Artificial intelligence is a fast-growing space in medicine, especially in medical imaging. The tools, for example, are helping validate physical exams and provide diagnosis of subjective symptoms. In 2021, AI in healthcare as a whole was worth around $11 billion and is expected to grow to $188 billion by 2030, which is a 37% CAGR growth. Improbable, a London-based firm backed by SoftBank, Andreessen Horowitz and Temasek, has seen an 85% reduction in losses ever since turning its focus to metaverse. Yes, the startup lost £19 million in the fiscal year 2022, a decrease of more than 85% from the previous year's loss of £131 million. According to Improbable, a significant factor for the company's loss reduction was a huge reduction in expenses for organizing large-scale virtual events. Improbable, founded in 2012, has spent years working to develop enormous, constantly rendering worlds in which thousands of users may play games and interact with one another. According to a press release, the British company's revenues more than doubled last year, £78 million or $95 million, as it works on metaverse expanded dramatically. Improbable CEO Herman Narula stated that the company had announced its best financial year on record, demonstrating how the company's bet on the metaverse had paid off. Well, that's all in this story. For more such updates, log on to our website www.reversetv.io or scan the QR code. This is me, Vishakha Thakur, signing off. एक वक्त था जब NFTs को महज एक हाई प्राइस प्रोफाइल पिक्चर माना जाता था, जिसकी कोई खास रियल वैल्यू नहीं थी। ऐसे में NFTs की यूटिलिटी क्या है, इसका कोई ठीक ठाक जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन पिछले 2 सालों में NFTs की जैसे काया पलट गई है। आज के दौर में आर्ट और म्यूजिक इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री भी NFTs का लोहा मान चुकी है। Thomas? You seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just dreams. 2021 में आई वार्नर ब्रदर्स की फिल्म द मैट्रिक्स ने ये भली भांति प्रूव कर दिया है। मैट्रिक्स ने NFTs के जरिए $5 मिलियन की भारी कमाई की। इस फिल्म से इंस्पायर्ड NFTs को फिल्म रिलीज से पहले बेचा गया था। इससे फिल्म के लिए अच्छी खासी एक्साइटमेंट क्रिएट हुई, फिल्म प्रमोशन हुआ और साथ ही रिलीज से पहले ही फिल्म ने कमाना भी शुरू कर दिया। और तो और अब वार्नर ब्रदर्स को अपनी फिल्मों की NFTs रिलीज करने का चस्का सा लग गया है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद वार्नर ब्रदर्स ने तमाम सुपर हीरोज जैसे सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश और एक्वामैन की NFTs तक रिलीज की। 2021 में ही हॉलीवुड की देखा देखी बॉलीवुड के सितारों ने भी NFTs को कैश करने की कोशिश की। जाहिर है सबसे कामयाब रहे सदी के शहंशाह अमिताभ बच्चन। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। बिग बी ने अपने बाबूजी के मशहूर कविता संग्रह मधुशाला के साथ साथ अपनी फिल्म के पोस्टर्स और अनसीन पिक्चर्स की NFTs के जरिए 7 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। बच्चन के अलावा कमल हसन, तापसी पन्नू, सनी लियोनी जैसी कई फिल्मी हस्तियां NFTs से अच्छी खासी कमाई कर चुकी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में एक NFT फंडेड फिल्म भी बन चुकी है। एक्टर विशाल मल्होत्रा, जिन्हें आप उनकी डिज्नी शो विक्की और वेताल और फिल्म इश्क विश्क में उनके सपोर्टिंग रोल के लिए जानते होंगे, विशाल ने इल्म नाम की एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की है, जिसे पूरी तरह से NFT से फंड रेज करके बनाया गया है और इसे रिलीज किया गया OTT पर।
जी हाँ, फिल्म फंडिंग और फाइनेंसिंग में भी NFTs एक अहम भूमिका अदा कर सकती हैं और वो है क्राउड फंडिंग के जरिए। यानी अगर आपके पास एक अच्छी कहानी है जिसे आप बड़े पर्दे पर उतारना चाहते हैं तो आपको किसी प्रोड्यूसर की जरूरत नहीं है। NFTs की मदद से आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं और तो और आप अपनी फिल्म के क्रू से ही फंड रेज कर सकते हैं, फिर वो मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर कॉस्ट्यूम डिजाइनर ही क्यों ना हो। क्राउड फंडिंग करने वाली पूरी टीम आपकी फिल्म को हिट कराने के लिए जी जान लगा देगी। इसके बदले जब तक फिल्म बन रही है क्रू अपनी NFTs को स्टेक कर सकता है या ज्यादा कीमत पर बेच सकता है या फिर फिल्म रिलीज के बाद उसके बॉक्स ऑफिस सक्सेस से कमाए गए प्रॉफिट को एंजॉय कर सकता है। दूसरा फायदा कॉपीराइट और ओनरशिप राइट्स का है, यानी कॉपीराइट सर्टिफिकेट्स की NFT बनेगी तो इसका वैलिड रिकॉर्ड रहेगा। दूसरी तरफ किसी फिल्म प्रोजेक्ट में कितने पार्टनर्स हैं, किसका कितना शेयर या ओनरशिप है, उसका रिकॉर्ड भी NFTs के तौर पर रखा जा सकता है जो ब्लॉकचेन पर हमेशा सिक्योर रहेगा। NFTs की मदद से फिल्म इंडस्ट्री को ओनरशिप, कॉपीराइट्स, फंडरेजिंग और प्रमोशन में अच्छा खासा फायदा हो सकता है। फाइनेंस न मिलने की वजह से जिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के फिल्म प्रोजेक्ट्स सालों तक ठंडे बस्ते में पड़े रहते थे और ऐसे स्ट्रगलिंग एक्टर्स जो बड़े पर्दे पर चमकने के सपने देख रहे होते हैं, उनके लिए भी फिल्म NFTs अब आशा की किरण बनकर उभरी है। एक और अहम फायदा है फिल्म प्रमोशन को लेकर। आमतौर पर फिल्म प्रोड्यूसर अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए लाखों रुपए खर्चते हैं, लेकिन NFTs के साथ आप अपनी फिल्म को कम खर्चे पर प्रमोट कर सकते हैं और उससे कमा भी सकते हैं, जैसे कि फिल्म के पोस्टर्स, सीन, सॉन्ग्स, बिहाइंड द सीन, डायलॉग्स, ऑडियो क्लिप्स और मर्चेंडाइज की NFTs बेचकर फिल्म प्रमोशन के साथ साथ अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि NFTs फिल्म इंडस्ट्री को बदल रही हैं और इसमें कई नए आयाम खोल रही हैं। ऐसे में NFTs की ताकत से कितने उभरते डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के सपने सिल्वर स्क्रीन पर चमकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। आप देखते रहिए 3.TV और ऐसी ही मजेदार स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। NFT मार्केट भले ही पिछले एक साल से गिरती सेल्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम से स्ट्रगल कर रही हो, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि इसी समय के दौरान NFT ने अलग अलग सेक्टर्स में रेवेन्यू अर्निंग और कई तरह की नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे भी खोले हैं। कई सेक्टर्स जैसे कि ऑटोमोबाइल, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और लग्जरी ब्रांड्स NFTs के दम पर सफलता का नया स्वाद चख रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर किस ब्लॉकचेन पर NFTs बनाना सबसे फायदेमंद है, क्योंकि हर ब्लॉकचेन NFTs के लिए सूटेबल नहीं होती। हर ब्लॉकचेन के अपने फीचर्स, खूबियां और खामियां होती हैं। तो चलिए देखते हैं किसी भी ब्लॉकचेन को चुनने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फिर देखेंगे कि इन पैरामीटर्स पर कौन सी ब्लॉकचेन खरी उतरती है। सही ब्लॉकचेन चुनने से पहले ये देखना जरूरी है कि उस पर ट्रांजैक्शन स्पीड कैसी है, मतलब कितनी तेजी के साथ ट्रांजैक्शन उस पर प्रोसेस और कंफर्म होती हैं। हाई ट्रांजैक्शन स्पीड यानी फास्टर और स्मूदर यूजर एक्सपीरियंस, और कम ट्रांजैक्शन स्पीड यानी ज्यादा वेटिंग टाइम और कंजेशन का खतरा। ट्रांजैक्शन स्पीड सबसे ज्यादा निर्भर करती है कंसेंसस मैकेनिज्म, ब्लॉक साइज और नेटवर्क की कैपेसिटी पर। ट्रांजैक्शन स्पीड के साथ साथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी है। ये वो फीस है जो यूजर्स को अपनी ट्रांजैक्शन प्रोसेस कराने के लिए चुकानी पड़ती है। हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है महंगी NFT क्रिएशन और ट्रेडिंग। जाहिर है इससे वो ब्लॉकचेन लेस एक्सेसिबल भी हो जाती है। तो वहीं लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है ज्यादा अफोर्डेबल और इंक्लूसिव NFT इकोनॉमी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिए कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन के नेटिव टोकन की डिमांड और सप्लाई, नेटवर्क पर कंजेशन और उस ब्लॉकचेन का फी स्ट्रक्चर। NFTs के लिए ब्लॉकचेन चुनने से पहले एक और चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है और वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी। किसी भी ब्लॉकचेन पर NFTs क्रिएट एंड एग्जीक्यूट करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का होना मैंडेटरी है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ही NFTs के लिए रूल्स और बिहेवियर सेट करते हैं। जितनी हाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी होगी, NFT को उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन के साथ क्रिएट किया जा सकेगा।
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी कैसी होगी वो उस ब्लॉकचेन की प्रोग्राम लैंग्वेज, डेवलपमेंट टूल्स और सिक्योरिटी मेजर्स पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ उस ब्लॉकचेन का कंपैटिबल और इंटरऑपरेबल होना भी बेहद जरूरी है, ताकि वो ब्लॉकचेन बाकी ब्लॉकचेन्स और प्लेटफॉर्म के साथ इंटरैक्ट और इंटीग्रेट कर सके। हायर कंपैटिबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी से एनएफटी इकोसिस्टम और ज्यादा डाइवर्स और कोलैबोरेटिव बनता है। इन तमाम फैक्टर्स के हिसाब से वो ब्लॉकचेन्स जो एनएफटीज के लिए सबसे सटीक हैं, वो है इथेरियम, बाइनेंस स्मार्ट चेन और फ्लो। कैसे? चलिए बताते हैं आपको। एनएफटीज के मामले में इथेरियम तमाम ब्लॉकचेन्स पर राज करती है, क्योंकि एनएफटीज के लिए इथेरियम हमेशा से यूजर्स के लिए पहली पसंद रही है। इनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉलिडिटी और ट्रफल, रीमिक्स और हार्ड हैट जैसे रिच डेवलपमेंट टूल्स हाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी ऑफर करते हैं। साथ ही एनएफटीज के ERC 721 और ERC 1155 स्टैंडर्ड्स हाई कंपैटिबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी ऑफर करते हैं। इसका EIP 1559 अपग्रेड ट्रांजैक्शन फीस कम करता है और इथेरियम 2.0 अपग्रेड स्केलेबिलिटी को सुधारता है। इन तमाम फायदों के बावजूद इथेरियम पर इकलौती लेकिन सबसे बड़ी खामी है इसका प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म और नेटवर्क कंजेशन, जिसकी वजह से इस पर ट्रांजैक्शन स्पीड कम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई है। चलिए अब बात करते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन की, जो एनएफटीज के लिए एक फास्ट ग्रोइंग ब्लॉकचेन है। इसके प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी कंसेंसस मैकेनिज्म की बदौलत पर सेकंड 300 ट्रांजैक्शंस की हाई स्पीड के साथ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होती हैं। ये अपने नेटिव टोकन BNB के साथ यूजर्स को लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफर करता है। इतना ही नहीं, ये इथेरियम पर हाई कंपैटिबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी ऑफर करता है, क्योंकि ये इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स और डेवलपमेंट टूल्स को सपोर्ट करता है। इथेरियम और बाइनेंस स्मार्ट चेन के अलावा फ्लो भी एनएफटीज के लिए एक अच्छी इनोवेटिव ब्लॉकचेन है। इसका मल्टी रोल आर्किटेक्चर ब्लॉकचेन पर कंप्यूटेशन और वेरिफिकेशन को अलग करते हुए हाई ट्रांजैक्शन स्पीड ऑफर करता है। क्योंकि इसके नेटिव टोकन फ्लो का फिक्स्ड फी शेड्यूल है, इसीलिए ये लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन ऑफर करने में सक्षम होती है। साथ ही एनएफटीज के लिए डिजाइन की गई अपनी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैडेंस की मदद से ये हाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी ऑफर करती है। इतना ही नहीं, अपने वर्म होल ब्रिज की वजह से ये इथेरियम के साथ हाईली कंपैटिबल और इंटरऑपरेबल है। तो अगली बार जब आप कोई एनएफटी मिंट करने के बारे में सोचेंगे तो इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में जरूर रखिएगा और फिर अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से ब्लॉकचेन चुनिएगा। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। 3.TV को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। Hello and welcome to 3.TV. I am your host Ruchi Sharma. Exciting news is coming from the Ethereum staking landscape. Ethereum liquid staking providers have either agreed or are working to impose a self-limit rule in which they promise not to own more than 22% of the Ethereum staking market. This self-limit move will ensure that the Ethereum network remains decentralized. For those of you who are newly initiated into the world of cryptocurrency, this story is a bit technical. So let me simplify it by shedding light on the word staking. Staking is a way to help secure proof of stake or a consensus mechanism for processing transactions and creating new blocks in a blockchain network such as Ethereum. Network participants can run a validator node by putting tokens at stake, which can then be slashed or taken away as a penalty if the node commits any malicious actions or is unreliable. If we talk about liquid staking, then liquid staking is an alternative to locking up a user's stake. Liquid staking provides all of the benefits of traditional staking services while unlocking the value of staked assets used as collateral across the DeFi ecosystem. Remember, staking offers crypto holders a way of putting their digital assets to work and earning passive income without needing to sell them. It is similar to depositing money in banks, which in turn the bank uses for lending to others. In return for locking money, you get paid interest. Similarly, when you stake your digital assets,
You lock up the coins in order to participate in running the blockchain and maintaining its security. In exchange for that, you earn rewards calculated in percentage yields. These returns are typically much higher than any interest rate offered by banks. The more money you lock in the bank, the higher the interest you earn. That's risk-free earning. Now coming back to the Ethereum staking services agreeing to a 22% limit of all validators. Among the Ethereum staking providers either already committed or are working to commit to the self-limit rule include Rocket Pool, Stakewise, Stader Labs and Diva Staking. According to Ethereum co-developer Superfizz, Puffer Finance, another liquid staking service, also announced its commitment to the self-limit. The proposal presumably aims to address concerns of Ethereum staking becoming increasingly centralized. The 22% self-limit rule ensures at least 4 major staking entities would need to collude in order for the chain to reach finalization. Interestingly, the largest Ethereum liquid staking एक वक्त था जब NFTs को महज एक हाई प्राइस प्रोफाइल पिक्चर माना जाता था, जिसकी कोई खास रियल वैल्यू नहीं थी। ऐसे में NFTs की यूटिलिटी क्या है, इसका कोई ठीक ठाक जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन पिछले 2 सालों में NFTs की जैसे काया पलट गई है। आज के दौर में आर्ट और म्यूजिक इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री भी NFTs का लोहा मान चुकी है। Thomas, you seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just dreams. तो 2021 में आई वार्नर ब्रदर्स की फिल्म द मैट्रिक्स ने ये भली भांति प्रूव कर दिया है। मैट्रिक्स ने NFTs के जरिए $5 मिलियन की भारी कमाई की। इस फिल्म से इंस्पायर्ड NFTs को फिल्म रिलीज से पहले बेचा गया था। इससे फिल्म के लिए अच्छी खासी एक्साइटमेंट क्रिएट हुई, फिल्म प्रमोशन हुआ और साथ ही रिलीज से पहले ही फिल्म ने कमाना भी शुरू कर दिया। और तो और अब वार्नर ब्रदर्स को अपनी फिल्मों की NFTs रिलीज करने का चस्का सा लग गया है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद वार्नर ब्रदर्स ने तमाम सुपर हीरोज जैसे सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश और एक्वामैन की NFTs तक रिलीज की। 2021 में ही हॉलीवुड की देखा देखी बॉलीवुड के सितारों ने भी NFTs को कैश करने की कोशिश की। जाहिर है सबसे कामयाब रहे सदी के शहंशाह अमिताभ बच्चन। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। बिग बी ने अपने बाबूजी के मशहूर कविता संग्रह मधुशाला के साथ साथ अपनी फिल्म के पोस्टर्स और अनसीन पिक्चर्स की NFTs के जरिए 7 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। बच्चन के अलावा कमल हसन, तापसी पन्नू, सनी लियोनी जैसी कई फिल्मी हस्तियां NFTs से अच्छी खासी कमाई कर चुकी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में एक NFT फंडेड फिल्म भी बन चुकी है। एक्टर विशाल मल्होत्रा, जिन्हें आप उनकी डिज्नी शो विकी और वेताल और फिल्म इश्क विश्व में उनके सपोर्टिंग रोल के लिए जानते होंगे, विशाल ने इल्म नाम की एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की है, जिसे पूरी तरह से NFT से फंड रेज करके बनाया गया है और इसे रिलीज किया गया OTT पर। जी हाँ, फिल्म फंडिंग और फाइनेंसिंग में भी NFTs एक अहम भूमिका अदा कर सकती हैं और वो है क्राउड फंडिंग के जरिए। यानी अगर आपके पास एक अच्छी कहानी है जिसे आप बड़े पर्दे पर उतारना चाहते हैं तो आपको किसी प्रोड्यूसर की जरूरत नहीं है। NFTs की मदद से आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं और तो और आप अपनी फिल्म के क्रू से ही फंड रेज कर सकते हैं, फिर वो मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर कॉस्ट्यूम डिजाइनर ही क्यों ना हो। क्राउड फंडिंग करने वाली पूरी टीम आपकी फिल्म को हिट कराने के लिए जी जान लगा देगी। इसके बदले जब तक फिल्म बन रही है, क्रू अपनी NFTs को स्टेक कर सकता है या ज्यादा कीमत पर बेच सकता है या फिर फिल्म रिलीज के बाद उसके बॉक्स ऑफिस सक्सेस से कमाए गए प्रॉफिट को एंजॉय कर सकता है। दूसरा फायदा कॉपीराइट और ओनरशिप राइट्स का है, यानी कॉपीराइट सर्टिफिकेट्स की NFT बनेगी तो इसका वैलिड रिकॉर्ड रहेगा। दूसरी तरफ किसी फिल्म प्रोजेक्ट में कितने पार्टनर्स हैं, किसका कितना शेयर या ओनरशिप है, उसका रिकॉर्ड भी NFTs के तौर पर रखा जा सकता है, जो ब्लॉकचेन पर हमेशा सिक्योर रहेगा। NFTs की मदद से फिल्म इंडस्ट्री को ओनरशिप, कॉपीराइट्स, फंड रेजिंग और प्रमोशन में अच्छा खासा फायदा हो सकता है। फाइनेंस न मिलने की वजह से जिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के फिल्म प्रोजेक्ट्स सालों तक ठंडे बस्ते में पड़े रहते थे
और ऐसे स्ट्रगलिंग एक्टर्स जो बड़े पर्दे पर चमकने के सपने देख रहे होते हैं, उनके लिए भी फिल्म एनएफटीज अब आशा की किरण बनकर उभरी है। एक और अहम फायदा है फिल्म प्रमोशन को लेकर। आमतौर पर फिल्म प्रोड्यूसर अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए लाखों रुपए खर्चते हैं, लेकिन एनएफटीज के साथ आप अपनी फिल्म को कम खर्चे पर प्रमोट कर सकते हैं और उससे कमा भी सकते हैं, जैसे कि फिल्म के पोस्टर्स, सीन, सॉन्ग्स, बिहाइंड द सीन, डायलॉग्स, ऑडियो क्लिप्स और मर्चेंडाइज की एनएफटीज बेचकर फिल्म प्रमोशन के साथ साथ अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि एनएफटीज फिल्म इंडस्ट्री को बदल रही हैं और इसमें कई नए आयाम खोल रही हैं। ऐसे में एनएफटीज की ताकत से कितने उभरते डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के सपने सिल्वर स्क्रीन पर चमकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। आप देखते रहिए 3.TV और ऐसी ही मजेदार स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। एनएफटी मार्केट भले ही पिछले एक साल से गिरती सेल्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम से स्ट्रगल कर रही हो, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि इसी समय के दौरान एनएफटी ने अलग अलग सेक्टर्स में रेवेन्यू अर्निंग और कई तरह की नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे भी खोले हैं। कई सेक्टर्स जैसे कि ऑटोमोबाइल, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और लग्जरी ब्रांड्स एनएफटीज के दम पर सफलता का नया स्वाद चख रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर किस ब्लॉकचेन पर एनएफटीज बनाना सबसे फायदेमंद है, क्योंकि हर ब्लॉकचेन एनएफटीज के लिए सूटेबल नहीं होती। हर ब्लॉकचेन के अपने फीचर्स, खूबियां और खामियां होती हैं। तो चलिए देखते हैं किसी भी ब्लॉकचेन को चुनने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फिर देखेंगे कि इन पैरामीटर्स पर कौन सी ब्लॉकचेन खरी उतरती है। सही ब्लॉकचेन चुनने से पहले ये देखना जरूरी है कि उस पर ट्रांजैक्शन स्पीड कैसी है, मतलब कितनी तेजी के साथ ट्रांजैक्शन उस पर प्रोसेस और कंफर्म होती हैं। हाई ट्रांजैक्शन स्पीड यानी फास्टर और स्मूदर यूजर एक्सपीरियंस, और कम ट्रांजैक्शन स्पीड यानी ज्यादा वेटिंग टाइम और कंजेशन का खतरा। ट्रांजैक्शन स्पीड सबसे ज्यादा निर्भर करती है कंसेंसस मैकेनिज्म, ब्लॉक साइज और नेटवर्क की कैपेसिटी पर। ट्रांजैक्शन स्पीड के साथ साथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी है। ये वो फीस है जो यूजर्स को अपनी ट्रांजैक्शन प्रोसेस कराने के लिए चुकानी पड़ती है। हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है महंगी एनएफटी क्रिएशन और ट्रेडिंग। जाहिर है इससे वो ब्लॉकचेन लेस एक्सेसिबल भी हो जाती है। तो वहीं लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है ज्यादा अफोर्डेबल और इंक्लूसिव एनएफटी इकोनॉमी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिए कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन के नेटिव टोकन की डिमांड और सप्लाई, नेटवर्क पर कंजेशन और उस ब्लॉकचेन का फी स्ट्रक्चर। एनएफटीज के लिए ब्लॉकचेन चुनने से पहले एक और चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी। किसी भी ब्लॉकचेन पर एनएफटीज क्रिएट एंड एग्जीक्यूट करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का होना मैंडेटरी है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ही एनएफटीज के लिए रूल्स और बिहेवियर सेट करते हैं। जितनी हाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी होगी, एनएफटी को उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन के साथ क्रिएट किया जा सकेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी कैसी होगी वो उस ब्लॉकचेन की प्रोग्राम लैंग्वेज, डेवलपमेंट टूल्स और सिक्योरिटी मेजर्स पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ उस ब्लॉकचेन का कंपैटिबल और इंटरऑपरेबल होना भी बेहद जरूरी है, ताकि वो ब्लॉकचेन बाकी ब्लॉकचेन्स और प्लेटफॉर्म के साथ इंटरैक्ट और इंटीग्रेट कर सके। हायर कंपैटिबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी से एनएफटी इकोसिस्टम और ज्यादा डाइवर्स और कोलैबोरेटिव बनता है। इन तमाम फैक्टर्स के हिसाब से वो ब्लॉकचेन्स जो एनएफटीज के लिए सबसे सटीक हैं, वो है इथेरियम, बाइनेंस स्मार्ट चेन और फ्लो। कैसे? चलिए बताते हैं आपको। एनएफटीज के मामले में इथेरियम तमाम ब्लॉकचेन्स पर राज करती है, क्योंकि एनएफटीज के लिए इथेरियम हमेशा से यूजर्स के लिए पहली पसंद रही है। इनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉलिडिटी और ट्रफल, रीमिक्स और हार्ड हैट जैसे रिच डेवलपमेंट टूल्स हाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी ऑफर करते हैं। साथ ही एनएफटीज के ERC 721 और ERC 1155 स्टैंडर्ड्स हाई कंपैटिबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी ऑफर करते हैं। इसका EIP 1559 अपग्रेड ट्रांजैक्शन फीस कम करता है
और इथेरियम 2.0 अपग्रेड स्केलेबिलिटी को सुधारता है। इन तमाम फायदों के बावजूद इथेरियम पर इकलौती लेकिन सबसे बड़ी खामी है इसका प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म और नेटवर्क कंजेशन, जिसकी वजह से इस पर ट्रांजैक्शन स्पीड कम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई है। चलिए अब बात करते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन की, जो एनएफटीज के लिए एक फास्ट ग्रोइंग ब्लॉकचेन है। इसके प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी कंसेंसस मैकेनिज्म की बदौलत पर सेकंड 300 ट्रांजैक्शंस की हाई स्पीड के साथ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होती हैं। ये अपने नेटिव टोकन बीएनबी के साथ यूजर्स को लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफर करता है। इतना ही नहीं, ये इथेरियम पर हाई कंपैटिबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी ऑफर करता है, क्योंकि ये इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स और डेवलपमेंट टूल्स को सपोर्ट करता है। इथेरियम और बाइनेंस स्मार्ट चेन के अलावा फ्लो भी एनएफटीज के लिए एक अच्छी इनोवेटिव ब्लॉकचेन है। इसका मल्टी रोल आर्किटेक्चर ब्लॉकचेन पर कंप्यूटेशन और वेरिफिकेशन को अलग करते हुए हाई ट्रांजैक्शन स्पीड ऑफर करता है। क्योंकि इसके नेटिव टोकन फ्लो का फिक्स्ड फी शेड्यूल है, इसीलिए ये लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन ऑफर करने में सक्षम होती है। साथ ही एनएफटीज के लिए डिजाइन की गई अपनी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैडेंस की मदद से ये हाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी ऑफर करती है। इतना ही नहीं, अपने वर्म होल ब्रिज की वजह से ये इथेरियम के साथ हाईली कंपैटिबल और इंटरऑपरेबल है। तो अगली बार जब आप कोई एनएफटी मिंट करने के बारे में सोचेंगे तो इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में जरूर रखेगा और फिर अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से ब्लॉकचेन चुनेगा। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। 3.0 टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। Hello and welcome to 3.0 TV. I am your host Ruchi Sharma. Exciting news is coming from the Ethereum staking landscape. Ethereum liquid staking providers have either agreed or are working to impose a self-limit rule in which they promise not to own more than 22% of the Ethereum staking market. This self-limit move will ensure that the Ethereum network remains decentralized. For those of you who are newly initiated into the world of cryptocurrency, this story is a bit technical. So let me simplify it by shedding light on the word staking. Staking is a way to help secure proof of stake or a consensus mechanism for processing transactions and creating new blocks in a blockchain network such as Ethereum. Network participants can run a validator node by putting tokens at stake, which can then be slashed or taken away as a penalty if the node commits any malicious actions or is unreliable. If we talk about liquid staking, then liquid staking is an alternative to locking up a user's stake. Liquid staking provides all of the benefits of traditional staking services while unlocking the value of staked assets used as collateral across the DeFi ecosystem. Remember, staking offers crypto holders a way of putting their digital assets to work and earning passive income without needing to sell them. It is similar to depositing money in banks, which in turn the bank uses for lending to others. In return for locking money, you get paid interest. Similarly, when you stake your digital assets, you lock up the coins in order to participate in running the blockchain and maintaining its security. In exchange for that, you earn rewards calculated in percentage yields. These returns are typically much higher than any interest rate offered by banks. The more money you lock in the bank, the higher the interest you earn. That's risk-free earning. Now coming back to the Ethereum staking services agreeing to a 22% limit of all validators. Among the Ethereum staking providers either already committed or are working to commit to the self-limit rule include Rocket Pool, Stakewise, Stader Labs and Diva Staking. According to Ethereum co-developer Superfizz, Puffer Finance, another liquid staking service, also announced its commitment to the self-limit. The proposal presumably aims to address concerns of Ethereum staking becoming increasingly centralized. The 22% self-limit rule ensures at least 4 major staking entities would need to collude in order for the chain to reach finalization.
Interestingly, the largest Ethereum liquid staking provider Lido Finance voted by a 99.81% majority not to self-limit back in June. Lido currently dominates the Ethereum staking market, accounting for 32.4% of all staked Ether, while the next entity, Coinbase, accounts for only 8.7% of the market, according to data from June Analytics. Well, that's all in today's special segment. We will meet again with a different and interesting story. Till then, keep watching 3.TV and do like, share and subscribe to our channel. For more such updates, please log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. Metaverse is set to alter our perception of fashion, as our digital avatar can wear any garment regardless of type, design or fabric in the virtual world. Yes, you may wear a Manish Malhotra lehenga or Kim Kardashian's shapewear apparel brand Skims in the metaverse. Literally speaking, the metaverse can open up a plethora of opportunities and brands are betting big on it. Bored Ape Yacht Club has recently announced a collaboration with the iconic streetwear brand Bape to redefine fashion, while Gucci has also launched the Milan Fashion Show collection in Metaverse. So I have a lot more amazing Metaverse related updates for you all. Hello and welcome to 3.TV. I am Vishakha Thakur and you are watching our special show Metaverse Magic. Bape, the iconic streetwear brand, has announced a cooperation with Bored Ape Yacht Club. This collaboration intends to push the frontiers of metaverse and streetwear fashion by releasing a limited edition tangible collection. BAYC is making its tangible appearance for the first time with an exclusive collection due to launch at the Ape Fest event in Hong Kong. BAYC owners will be among the first to gain access to this limited physical range, increasing the value of their investments. The BAYC and Bape collection will be available at Bape stores globally after its exclusive debut at Ape Fest. Well, the collaboration between BAYC and Bape is a watershed moment in the world of NFTs, crypto art and streetwear fashion. Well, Gucci too is preparing to reinvent virtual fashion. Gucci has made its runway debut at Milan Fashion Week, showing the Ankara collection. This historic event did not remain in the physical world, as Gucci has moved into the metaverse, creating a digital version of the fashion show that is available across many platforms. Now, Gucci wants to ensure that its appeal transcends beyond the domain of fashion through its collection. The high-end fashion label has collaborated with gaming platforms such as Roblox, Zepeto in South Korea and QQ in China to offer dedicated metaverse experiences. And now let's listen in to what Mr. Suresh Satyanarayanan has to say about the potential of metaverse. Anything that you see on the planet, really people are bringing to metaverse. Agreed, it is very, very good. But the concept is, see, how your activity is going to support the general public for a better living. That is my question. So, the most important thing that I want to appeal to the whole industry is that there should be some nice use cases where people are constructively benefited. People are not cheated. That's the most important thing. People's time is not killed. And people, we in this segment of metaverse have to work in such a way that across the globe people start trusting us, because metaverse means still there is a lot of trust that has to come. Even though there is a lot of scope, a lot of trust needs to come in metaverse. Well, there are a variety of brands that have ventured into the metaverse. Surprisingly, jewelry showrooms can also be found in the metaverse. Yes, Senko Gold and Diamonds, based in Kolkata, has created Senkoverse, India's first virtual jewelry showroom in the metaverse. Well, it provides customers with a unique and engaging method to shop for jewelry from the comfort of their own homes. The showroom offers 360-degree views of jewelry items in breathtaking 3D detail, as well as interactive tools for zooming in on specific elements and learning more about the products. Also, over 100 jewelry items are available in the virtual realm.
And now I have another interesting update for you all from the education sector. Students at King Abdulaziz College of Architecture and Planning, a public research university in Saudi Arabia, recently unveiled their latest project, Building in the Metaverse, which will allow the faculty as well as the students in the education field to engage and interact with the content. Well, students Ahmad Khoja and Abdulaziz created the fully immersive environment using virtual reality technology. Despite the limitations, they both believe that these technologies have the potential to dramatically reduce material costs. Interesting, isn't it? Well, without a doubt, Metaverse will alter several industries, including the banking industry. Elite, one of Pakistan's biggest private banks, has teamed up with R&D firm Synapsify Systems and UAE-based Web3 fintech Facet to supplement digital banking with Metaverse and Web 3.0 projects. Elite Bank has announced its participation in the Metaverse and Web 3.0 initiatives as part of its commitment to innovation and improving its digital banking services. Well, the project's goal is to provide ABL customers with a more immersive virtual experience within the metaverse, including avatar customization and access to information, as well as about the bank's services in the virtual realm. That's all in this episode of Metaverse Magic. I will be back with more such interesting updates from the Metaverse space. Do like, share and subscribe to our channel, and for more such interesting updates, log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. This is me, Vishakha Thakur, signing off. With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. Investment frenzy around exchange-traded funds or ETFs has gained traction after the US regulators have rallied around the concept, asking the markets regulator to expedite approval process on a priority basis. Investment manager VanEck has fired up the marketing engine for its upcoming Ether ETF, which some analysts expect could be launched as early as October 2. On September 28, VanEck released the two Enter the Ether-themed TV commercials, revealing that its Ethereum strategy ETF, tickered EFUT, is coming soon. The commercials came on the same day VanEck published a press statement about its upcoming EFUT, stating it will be listed on the Chicago Board Options Exchange and be managed by Greg Krenzer, head of active trading at VanEck. Analysts believe the TV ads could hint that Ether future ETFs are happening sooner than expected. The first of VanEck's Enter the Ether advertisements is a rather short and quirky 15-second video featuring 5 actors looking at the camera with a deadpan expression and strange alien-sounding music in the background. Ethereum, now in an ETF form, coming soon, says an actor. Oh, and hodl off, folk off, says another actor before the Enter the Ether message appears and the ad ends. The second ad appears more straightforward with a 30-second spot suggesting that a shift is coming soon and that Ethereum's gravitational pull will draw everyone in. There are 15 Ether future ETFs from 9 issuers vying to launch.
Asset manager Valkyrie commenced buying Ether future contracts after getting approval to convert its existing Bitcoin futures exchange traded funds to a 2-for-1 investment vehicle. Today, the Valkyrie Bitcoin Strategy ETF began adding exposure to the Ether future contracts, making it the first US ETF to provide exposure to Ether and Bitcoin futures contracts under one wrapper, a spokesperson told CoinDesk in an email statement. Valkyrie was first to get approval for Ethereum futures ETF, among other firms, as it supplemented its prospectus and updated risk disclosures related to Ether futures, said the spokesperson. The fund's new strategy to combine both Ethereum and Bitcoin futures contract into one ETF will be formally effective on October 3rd, and the name will be updated to Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF, while the ticker will remain BTF. The fund will join other entities that filed to start Ethereum futures ETF, including Volatility Shares Ether Strategy ETF, Bitwise Ethereum Strategy ETF, Vanik Ethereum Strategy ETF, Roundhill Ether Strategy ETF, ProShares Short Ether Strategy ETF, ProShares Ether Strategy ETF, and Grayscale Ethereum Futures ETF. In anticipation of a potential government shutdown, the US Securities and Exchange Commission has postponed making a judgment on a number of applications for spot Bitcoin exchange-traded funds, including one from BlackRock. According to a separate September 28 filings, the SEC also postponed the spot Bitcoin ETF applications of Invesco, Bitwise, and Valkyrie. Nevertheless, Bloomberg ETF analyst James anticipates that the securities regulator would also delay the applications from Fidelity, Vanak, and WisdomTree. Many applicants experienced the most recent delays 2 weeks before the second deadline, when they had anticipated hearing from the securities regulator between October 16th and 19th. James said the timing of the delays is related to the expected US government shutdown potentially taking place on October 1st, which will disrupt the country's financial regulators and other federal agencies. When the first deadline was nearing in late August, his SEC postponed a number of spot Bitcoin ETF applications. Meanwhile, the third set of deadlines for the 7 firms is around mid-January, and they could also be delayed. The SEC will have to make a final decision by mid-March at the very latest. Eric Balchunas, an analyst with Bloomberg ETFs, predicted in late August that the likelihood of a spot Bitcoin ETF being authorized by the end of 2023 had improved from 65% to 75%. That's it in today's special segment. For more such updates, follow 3.0 TV or log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code to know more. Hello and welcome to 3.0 TV. I am your host Shikha Singh. And in today's special segment, we will explore why Solana is the most loved altcoin among investors. So let's get started. Among several cryptocurrencies, Solana was touted to challenge Ether with an eco-friendlier approach, faster transaction speeds, and more consistent costs. These factors are strong enough to drive prices of any token. But in case of Solana, its fortune fluctuated with changing time. Unfortunately, Solana has lost over $50 billion in value since the beginning of 2022, a year marked by outages, overloads, and significant exposure to Sam Bankman-Fried's FTX exchange. Bankman-Fried's companies held nearly $1.2 billion worth of the token and associated assets. When FTX fell apart, investors bailed on Solana to the tune of about $8 billion. Since then, interest in altcoins may have waned as big crypto investors pull cash out of the funds, but there is one coin which still has them excited, and it's none other than Solana. Over the past 7 weeks, investors have largely withdrawn from crypto investment products. European digital asset manager CoinShares said in a Monday report, for the past 9 weeks, institutional investors have been plugging cash into the 10th biggest digital asset by market cap, Solana.
CoinShares said that $700,000 had been invested over the past week into Sol via crypto investment providers, making the cryptocurrency the most loved altcoin among investors at present. Why are we terming Sol as the most loved altcoin? If you consider year-to-date fund inflows in the protocol, it currently stands at a whopping $26 million. In contrast, investors in the past week pulled $8.6 million out of Polygon investment products and $3.2 million out of Ethereum. Investors did put $3.8 million into Bitcoin, the biggest digital asset by market capitalization, and pulled out of short Bitcoin products for the 19th consecutive week. Solana has been getting some traction lately because MakerDAO's co-founder and CEO Rune suggested launching the project's new chain on Solana-based platform. This will lead to more network activity and transactions on Solana blockchain, which can be translated into the rise of Sol token. In another latest announcement, payment giant Visa expanded its stablecoin settlement services to the Solana blockchain. The program is currently in a pilot and testing phase, but looks to improve upon the capabilities of legacy payment rails. Lastly, Sol is the asset used to make transactions on Solana. A blockchain developers used to build decentralized applications, which can be anything from first-person shooter games to decentralized finance lending protocols. Well, that's all in today's special segment. We will keep meeting again. Until then, keep watching 3.0 TV. Do like, share and subscribe to our YouTube channel. For more such updates, please log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code to know more. With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. Hello and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma. British pop singer and former Take That member Robbie Williams is set to make his metaverse debut. Williams' first foray into the Web3 space is a partnership with AI-powered lifestyle metaverse platform Lightcycle, a virtual city with elements of art, film, gaming, music, fashion, sport, property and retail. A personal performance of Williams' 25-year anniversary live show designed as a 3D metaverse experience will take place in the virtual city. Lightcycle is due to launch in the fourth quarter of 2023. The musician's initiation into the realm began with his AI-assisted composition of his signature 1997 song, Angels. The partnership was formed between Williams and Metaverse, Web3 and AI infrastructure provider VortexLab.uk. A purview of the Williams Metaverse event will be unveiled as part of a Lightcycle Purview Night at Edge Global Web3 and AI Investment Summit taking place in Hong Kong at the Asia World Expo on September 26th and 27th. Nobuaki Kobayashi, the trustee overseeing the defunct Mt. Gox Bitcoin Exchange's estate, has officially announced an extension of the deadline for repaying its creditors. The new deadline for creditor repayments has been moved from October 31st, 2023 to October 31st, 2024, as revealed in a letter dated September 21st. A rehabilitation proposal, which promised to remunerate about 90% of the assets owed to affected customers, was approved in October 2021. Based out of Japan, Mt. Gox was one of the earliest and most influential cryptocurrency exchanges, once facilitating over 70% of all Bitcoin trades. However, its reputation took a devastating hit following a major hack in 2011.
The exchange eventually collapsed in 2014 amid allegations of insolvency leading to the loss of 850,000 Bitcoin. The fallout left approximately 24,000 creditors in its wake, many of whom have been eagerly awaiting the resolution of their claims for years. Since the exchange's collapse, it has been an uphill struggle for Mt. Gox creditors who have dealt with rehabilitation plans, delays, and hefty fees in a drawn-out battle to retrieve lost funds. Nunori, a 90-year-old digital fashionista and metaverse avatar, is going places. She has worked with most of the top brands in the fashion industry and continues to wow consumers with her newly launched single, Dominoes. Take a look. Just a little push, that's enough to start a chain reaction. The digital avatar with more than 400,000 followers on Instagram can be seen wearing a series of outfits, notably Kim Kardashian's Skims line in the video. Interestingly, Warner Music Group has offered this first record deal to Nunori, and artificial intelligence technology was used to create the singing voice of hers. Also, the character's debut track Dominoes features 38-year-old German DJ and music producer Annie Fabin and was written by a group of songwriters and musicians. Well, Nunori is the creation of Jörg Zuber, who is the founder of a creative agency, Opium Effect, based in Germany. That's all in this story. Keep watching 3.TV for more such interesting updates, or log on to our website www.3voicetv.io or scan the QR code. This is me, Vishakha Thakur, signing off. Hey guys, what's up? So I just want to ask you a few questions. What according to you a gaming should consist? I mean what all components or the wow factor? Oh no, I know you guys might think, how do we get rid of this female Supandi? But last question, promise. What according to you should be the key elements or the driving factor of the game? If you ask me, I think games that simply create magic. Magic in the sense people cross borders to meet each other. Okay, just kidding. Unless you're living under a rock, you know how addictive PlayerUnknown's Battleground is. Okay, yaar, sorry. PUBG. Few months ago, PUBG creator Krafton launched a project called Miglu. Now, the South Korean game studio announced that its upcoming NFT-driven metaverse game project will be called Over There and offer the first look at the creation-centric platform. You can choose to be happy now. Something's changed. A soft launch of Over There is scheduled in December and completely released between January and July 2024, according to Krafton. Oh, and for the game, the business has established its own blockchain known as Setless. Over There appears to be a Roblox-like mobile game platform developed with Epic Games' Unreal Engine 5 that will provide creators with generative artificial intelligence capabilities to assist gamers in creating their own shooting games, role-playing games, and action role-playing games, among other things. Users will also be able to design custom avatars and talk with one another on the social game platform. The first official teaser shows an open world platform where users can create games and landscapes with AI tools, play a variety of user-generated games, attend virtual concerts, customize their avatars, and more. Over There plans to introduce a create-to-earn a game economy, allowing players to buy and sell in-game digital assets as NFTs, aiming to provide transparency and secure transactions in the gaming experience. Earlier this year, Krafton announced a project as a joint venture between the studio and Neverz, an augmented reality tech firm. Krafton still holds 85% stake in the project, while Neverz holds the remaining 15%. Krafton and Neverz are utilizing Setless blockchain for Over There's economy, enabling gamers to earn funds on Coinbase
and Circle's USDC stablecoin using Cosmos for USDC payments as announced during Korea Blockchain Week. Now let's talk about what's happening in the gaming zone. I'm sure you guys are aware about mobile games coming to the Web3 realm. Web3 games are also hopping onto the mobile bandwagon. Mythical Games is revising its Web3 PC game, Blankos Block Party, and taking the title to mobile gamers. Play and dance and race and shoot and jump and fly with jetpacks or maybe bat wings. And there's lava and a mountain made of junk food. As a result, it will divert all its development resources to repurposing its game for small screen and move its PC version into an ongoing live event. NFL franchise Mythical Games is renaming its game Blankos to appeal the mass market play anywhere generation. The move follows the success of the NFL Rivals game on iOS and Android, which has nearly 2.5 million downloads. Blankos will be completely rebuilt from the ground up, focusing on the mobile-first platforms and cross-play features for PC users. This move marks a new dynamic for the franchisee. The gaming industry is huge than the music and movie industry combined, as per data from Super Data Research. Statista also states that the gaming industry could gain $334 billion in revenue this year, and exploding topic states the world has roughly 3.09 billion players. Changes to this entertainment medium will impact millions, so we must see how this industry transforms. That's it in today's special segment. For more such updates, follow 3.0TV or log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code to know more. Hello and welcome to 3.0 TV. I am your host Ruchi Sharma. Exciting news is coming from the Ethereum staking landscape. Ethereum liquid staking providers have either agreed or are working to impose a self-limit rule in which they promise not to own more than 22% of the Ethereum staking market. This self-limit move will ensure that the Ethereum network remains decentralized. For those of you who are newly initiated into the world of cryptocurrency, this story is a bit technical. So let me simplify it by shedding light on the word staking. Staking is a way to help secure proof of stake or a consensus mechanism for processing transactions and creating new blocks in a blockchain network such as Ethereum. Network participants can run a validator node by putting tokens at stake, which can then be slashed or taken away as a penalty if the node commits any malicious actions or is unreliable. If we talk about liquid staking, then liquid staking is an alternative to locking up a user's stake. Liquid staking provides all of the benefits of traditional staking services while unlocking the value of staked assets used as collateral across the DeFi ecosystem. Remember, staking offers crypto holders a way of putting their digital assets to work and earning passive income without needing to sell them. It is similar to depositing money in banks, which in turn the bank uses for lending to others. In return for locking money, you get paid interest. Similarly, when you stake your digital assets, you lock up the coins in order to participate in running the blockchain and maintaining its security. In exchange for that, you earn rewards calculated in percentage yields. These returns are typically much higher than any interest rate offered by banks. The more money you lock in the bank, the higher the interest you earn. That's risk-free earning. Now coming back to the Ethereum staking services agreeing to a 22% limit of all validators. Among the Ethereum staking providers either already committed or are working to commit to the self-limit rule include Rocket Pool, Stakewise, Stader Labs and Diva Staking. According to Ethereum co-developer Superfizz, Puffer Finance, another liquid staking service, also announced its commitment to the self-limit.
The proposal presumably aims to address concerns of Ethereum staking becoming increasingly centralized. The 22% self-limit rule ensures at least 4 major staking entities would need to collude in order for the chain to reach finalization. Interestingly, the largest Ethereum liquid staking provider Lido Finance voted by a 99.81% majority not to self-limit back in June. Lido currently dominates the Ethereum staking market, accounting for 32.4% of all staked Ether, while the next entity, Coinbase, accounts for only 8.7% of the market, according to data from Dune Analytics. Well, that's all in today's special segment. We will meet again with a different and interesting story. Till then, keep watching 3.TV and do like, share and subscribe to our channel. For more such updates, please log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. Hello and a very warm welcome. I am Ruchi Sharma. Leading virtual digital assets have once again started moving higher and are experiencing a sharp rally on Monday as the headwinds in the traditional markets have subsided. Bitcoin, largest cryptocurrency by market capitalization, was recently trading at $27,769, up 1.86%. Ethereum, the second largest crypto in market value, was quoting 0.72% higher at $1,648. Analysts have highlighted that the BTC has come out from its downtrend starting in the summer and turned the $27,000 level into support. It is now eyeing $30,000 mark as low volatility is likely to prevail in the market in the near future. A less than anticipated increase in the US jobs data helped soothe nerves in traditional markets. The S&P 500 index closed the day 0.8% higher, while the tech-heavy Nasdaq 100 index posted a 1.45% gain. Elsewhere, Solana's native token SOL also pared its gains from earlier this week, slumping 2.3% in the past 24 hours. The token is still up over 20% in a week. Layer 1 blockchain Avalanche AVAX was a top performer among major cryptocurrencies, surging 7%. XRP also rallied over 3% earlier in the day as Ripple's Asian arm obtained a license in Singapore and a favorable court ruling. The global crypto market cap added 0.63% to $1.09 trillion over the last 24 hours. On the other hand, the total crypto market volume decreased 23.79% to $27.41 billion.
The total volume in DeFi is currently $2.51 billion and all stable coins $25.68 billion, representing 9.17% and 93.68% respectively of the total crypto market 24-hour volume. Bitcoin's dominance eased 0.35% to 49.69%. IC15 index, the barometer of top 15 tokens, surged 1.18% to 35,627.29. Meanwhile, the Hong Kong Stock Exchange's Stock Connect system, which links Hong Kong's stock markets with those in mainland China, is getting an upgrade thanks to blockchain technology. The upgrade, dubbed Synapse, will incorporate smart contracts to help execute post-trade workflows and reduce settlement risk.